Good morning, students. Welcome back to your maths class. How are you all? I hope you all are safe and healthy. So, students, in today's class, we are going to start with the new exercise, that is exercise 9.2 from your chapter number 9, that is money. In last class, we have solved the questions from exercise 9.1, and in today's class we are going to solve questions from the new exercise, that is 9.2. So this exercise 9.2 is based on money only, but in this exercise we are going to do the addition and subtractions. Okay, basically main operations which we are going to do in this exercise are additions and the subtractions. So these first few questions are based on the addition, then the next few questions are based on the subtraction. We have word problems too in this exercise. So first of all we'll start with the addition problems. Okay, so kids, remember, in money we have two types of currencies, पैसे एंड रुपीज़, है ना. तो पैसे और रुपीज़ दोनों अलग अलग होते हैं इन वैल्यू. यू कांट ऐड पैसे विद दी रुपीज़. आप पैसे को रुपीज़ के साथ ऐड नहीं कर सकते. टू ऐड पैसे विथ रुपीज़ यू हैव टू कन्वर्ट ईदर रुपीज़ इनटू पैसा, या तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, और दोनों की सेम करेंसी होनी चाहिए. पैसा पैसे के साथ ऐड करेंगे, रुपीज़ रुपीज़ के साथ ऐड करेंगे. ठीक है. या इन सम प्रॉब्लम्स दे हैव गिवन द मनी लाइक दिस, रुपीज़ 418.35. सो आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास ओनली, द डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स योर रुपीज़ फ्रॉम द पैसा. सो डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट में होता है नंबर, दैट इज़ योर रुपीज़, एंड डेसिमल पॉइंट के जो राइट में होता है, दैट इज़ योर पैसे. सो इन दिस क्वेश्चन रुपीज़ 418.35, तो ये पूरा का पूरा डेसिमल पॉइंट के वजह से दिस होल करेंसी इज इन रुपीज़ ओनली. ठीक है. ये जो पूरी करेंसी है वो किस में आ गई है, रुपीज़ में आ गई. और ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हमें सेपरेट करता है रुपीज़ को और पैसे को. ठीक है. तो शैल वी स्टार्ट. सो आई विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 6. Okay, and remaining questions, those are 2, 3, 4, 5, you have to solve on your own in your homework. So let's start with the question number 1. In this we have to add rupees 418.35 with rupees 129.83. okay, so what we have to add, rupees 418.35 with the rupees 129.83. तो what we'll do, we'll separate the numbers. जैसे decimal point के right side वाले numbers will separate, and then we'll separate the decimal point के left वाले numbers. So decimal point के right वाले number is your rupee, and decimal point का left वाला number is your पैसे. Okay, so just remember, you have to put a decimal point very carefully while doing the addition. So पहले you have to write the पैसे. okay, पैसे लिखे, फिर put a decimal point after 3, then write the rupees. रुपीज़ लिखे, फिर नेक्स्ट नंबर जो है 129, उसका भी डेसिमल पॉइंट किसके बाद है, नंबर 8 के बाद है. तो 83 लिखो पहले, put a decimal point, then what is the number before this decimal point, it is 129. तो 129 भी you have to write very carefully. ones place का नंबर ones place के अंदर, tens place का नंबर tens place के अंदर, 100 place का 100 place के अंदर अंडर लिखना है. ठीक है. मिक्सअप मत करना, प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही नंबर्स जाने चाहिए. ठीक है. तो आफ्टर जैसे आप, नहीं तो आप इधर से भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे, बट डेसिमल पॉइंट जहाँ पे दिया है वहीं पे आना चाहिए. जैसे 418.35 लिखो प्लस 129.83 लिखो, बट 35 और 83 एक मीन्स 5 शुड बी एट वन प्लेस. यहाँ पे
3 should be at 1's place. Then in paisas only, this 3 should be at 10's place, 8 should be at 10's place. And then in after the decimal point जो रुपीज़ में है वहाँ पे भी आपको क्या करना है, 8 should be at 1's place, 9 should be at 1's place. तो 1's place के नंबर 1's place में ही आने चाहिए, 10's place के नंबर 10's place में आने चाहिए, 100 place के नंबर्स 100 place में आने. एंड देन स्टार्ट डूइंग द रेगुलर एडिशन. आपको सबको एडिशन आती ही होगी. So we'll start adding numbers from this side. 5 plus 3 is equal to 8. Write down the 8. 3 plus 8. 3 plus 8 is equal to 11. So we have to write 1 over here. Then the carry forward will go to the next digit. Next digit is 8. So carry forward 1 we have written above the 8. So 8 plus 1 is 9. 9 plus 9 is 18. Again we have a carry forward 1. We'll write 8 over here in answer, and carry forward 1 will be written above the next digit. So 1 plus 1, these all are the carry forwards. Okay, I'll circle them. 1 plus 1 is 2. 2 plus 2 is 4. Okay, there is no carry forward in this addition. Then 4 plus 1 is 5. So answer is 548.18. Don't forget to put a decimal point. जैसे 3 plus 8 is 11. We have written 1. 1's place का number 1 over here, and 10's place का 1, that will be taken as the carry forward. So here after this one we have to put the decimal point. Don't forget to give the decimal point at the accurate place. ठीक है, 2 digits के बाद क्या देना है हमने, decimal point. 8 और 1 के बाद यहाँ पे आएगा decimal point. So answer is rupees 548.18. एडिशन का आंसर क्या आया, rupees 548.18. Next question. Question number 6. In that we have to add rupees 800.80 with rupees 89.70 and rupees 100.00. ओके, तो हमको किन किन नंबर्स की एडिशन करनी है, हमको 3 नंबर्स की एडिशन करनी है, 800.80, 89.70 and 100.00. So write all the numbers properly and don't forget to put the decimal point after the appropriate digit. Okay, तो जो डेसिमल पॉइंट के मैंने बोला है, लेफ़्ट साइड में आते हैं रुपीज़ और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में आते हैं हमारे पैसे. सो रुपीज़ पहले लिख लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, 800 लिख लिया. देन पुट अ डेसिमल पॉइंट. व्हाट कम्स आफ्टर 800.80, तो 80 यहाँ पे लिख लो. देन प्लस क्या करना है, 800 के बाद वी हैव टू ऐड 89.70. राइट डाउन 89. सो वाइल राइटिंग 89, listen, 9 is at 1's place, 8 is at 10's place. So you have to write 9 over here at 1's place and 8 over here at 10's place. आप यहाँ पे नहीं लिखोगे 8, यहाँ पे नहीं लिखना है. ये जो 8 यहाँ पे है, it is at 100's place. तो आपको जो ये 89 का 8 है, we have to write it at 10's place. 9 is at 1's place. Okay, then put a decimal point. 89 point. After decimal point there is a number 7070. Write 7070. Next number is 100. So 100, 1 is at 100's place, 0 is at 10's place, another 0 is at 1's place. So likewise you have to write 1 will be under the 8 because 8 and 1 are at the 100's place. 0 is at 10's place. This 0 is also at 10's place. Then put a decimal point over here and 00. Then after decimal point 00. Start doing the addition. पहले डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड वाले नंबर्स है उनकी एडिशन करनी है. ओके, यू हैव टू ऐड द नंबर्स विच आर ऑन द राइट साइड ऑफ योर डेसिमल पॉइंट. 0 plus 0 plus 0 will give you 0. 8 plus 7 is equal to 15. Then write the 5 at 1's place and 1 will be your carry forward. 1 plus 9 is equal to 10. So 0 will be at
8 plus 7 is 15, so 5 is at one's place and 1 will be taken as the carry forward. It will move to the next digit and remember to give the decimal point over here. ठीक है, यहाँ पे decimal point लिखना ज़रूरी है. After that 1 plus 9 is equal to 10. So 10 we have carry forward 1 and we'll write 0 in the answer. So 1 plus 8 is equal to 9. So answer is 9. So we'll write 9 in the answer. Then 8 plus 1 is equal to 9. So write the 9 in the answer. So after addition we are getting 990.50. So what is the answer after adding all these three rupees? It is rupees 990.50. Next, question number 7. Read the following menu and find the amount each person paid. So this is nothing but the menu card of one restaurant. ये जो है ये एक रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड है. यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हैं, फूड आइटम्स के नाम दिए हैं एंड यहाँ पे उनकी प्राइस दिए है. तो फूड आइटम्स का नाम है और उसका प्राइस है. प्राइस मतलब उसका कीमत दिया हुआ है. जैसे आपको पिज़्ज़ा खाना है तो आपको 89.00 पैसे रुपीज़ देने पड़ेंगे. आपको बर्गर खाना है देन यू हैव टू पे 25 रुपीज़. इफ़ यू हैव टू ईट अ पैटी then you have to give the 10 rupees, 10.75 rupees. If you have to eat if you have to drink a coke you have to give 7 rupees. अगर आपको केक खाना है तो केक की प्राइस है 12.25 rupees. If you want to have a soup then the price or the cost of the soup is 35.50 rupees. And if you want to have the ice cream then the cost of an ice cream is 9.75 rupees. तो ये सारे हैं आइटम्स के नाम एंड दीज आर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम. ओके, हर एक आइटम की क्या प्राइस है ये मेन्यू कार्ड में मेंशन किया है. नाउ दे आर आस्किंग अस व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड द अमाउंट ईच पर्सन पेड. तो इन दिस क्वेश्चन नंबर 7 there are 3 different people who have ordered different items from the menu. तो रिंकी bought a burger, soup and an ice cream. तो रिंकी ने क्या क्या खरीदा है? बर्गर, सूप और आइसक्रीम. तो इसका भी अमाउंट डिफरेंट होगा. फिर अंबिका ने क्या क्या ऑर्डर किया? उसने पिज़्ज़ा, केक और कोक. तो इन तीनों की भी प्राइस अलग है तो इनका भी अमाउंट टू बी पेड डिफरेंट आएगा. और सी पार्ट में क्या है? सोनू बॉट अ पिज़्ज़ा, पैटी एंड एन आइसक्रीम. तो इसके भी जो पैसे हैं वो इन दोनों से अलग कैलकुलेट करने हैं. तो मैं ए पार्ट सॉल्व करूँगी, बी और सी आप लोगों ने अपने मन से सॉल्व करना है. सो अमाउंट टू बी पेड बाय रिंकी वी हैव टू फाइंड आउट. तो रिंकी ने क्या क्या खरीदा है? व्हाट रिंकी बॉट फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट? जस्ट चेक. रिंकी बॉट अ बर्गर, अ सूप एंड एन आइसक्रीम. रिंकी ने क्या क्या खरीदा है उस रेस्टोरेंट में खाने के लिए? उसने एक बर्गर खरीदा, एक सूप खरीदा है और उसने एक आइसक्रीम खरीदी है. सो व्हाट अमाउंट शी हैज़ टू पे? She has to pay the price of a burger, then price of a soup and the price of an ice cream. इन तीनों का मिला के जितना भी पैसा होता है उतना उसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा. आइसक्रीम, सूप और बर्गर तीनों की जितनी भी प्राइस को मिला के जितना भी पैसा बनता है, तीनों का प्राइस का एडिशन करने के बाद जितना भी पैसे बनते हैं उतने उसको क्या करने पड़ेंगे? पे करने पड़ेंगे. सो अमाउंट पेड बाय रिंकी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अ बर्गर प्लस प्राइस ऑफ सूप प्लस प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम. इन तीनों की प्राइस जब हम ऐड करेंगे देन विल गेट द अमाउंट विच द रिंकी हैज़ टू पे. नाउ डू द एडिशन. अमाउंट पेड बाय रिंकी. What is the price of the burger? The price of the burger is 25 rupees. What is the price of the soup? The price of the soup is 35.50. What is the price of an ice cream? The price of an ice cream, it is already mentioned in the menu card. Price of an ice cream is 9.75. So
Let's add together all these three numbers, then we'll get the amount paid by the Rinki. चलो एडिशन करो. 25.00 plus 35.50 plus 9.75. So remember, this 9 is the single digit number. This 9 is at ones place. Just remember to write 9 at the ones place. Do not write 9 at the tens place. Okay, 9 को टेंस प्लेस में नहीं लिखना है, 9 को वंस प्लेस के अंडर ही लिखना है. देन पुट द डेसिमल पॉइंट, हाँ, एंड आफ्टर दैट राइट द नंबर्स विच आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट. सो 25.00 आया, फिर 35.50, then 9.75, and then start doing the addition. This 25 is the price of burger, this is the price of soup, and this is the price of an ice cream. So 0 plus 0 plus 5 is equal to 5. Then 0 plus 5 plus 7 is equal to 12. So we'll write 2 in the answer and 1 will be taken as the carry forward. So 1 will move on to the next digit. And remember to put a decimal point after 2, because यहाँ पे decimal point कितने numbers के बाद आ रहा है, 2 numbers के बाद आ रहा है, तो इसलिए after 2 we will give the decimal point. Then 1 plus 5 is 6, 6 plus 5 is 11, 11 plus 9 is 20. So we'll write 0 in the answer and 2 will be taken as the carry forward. It will move to the next digit. So 2 plus 2 is 4, 4 plus 3 is 7, 7 plus 0 is 0, 7 plus 0 is 7. So your final answer after addition is 7. And the total amount to be paid by Rinki is rupees 70.25. Okay, in this way we have found what amount Rinki has to pay. So similar way you have to find amount paid by Ambika and Sonu. B और C part आपने अपने आप solve करना है. Okay, now we have done with the addition part. Subtraction part we will discuss on tomorrow. If you have any query related to this exercise, you can ask me. Till then, thank you. Have a good day.